Good morning, everyone. Welcome back to the class. So, yesterday we have winded up Directive Principles of State Policy that covers Part 4 of our Indian Constitution and covers Article 36 to 51. कल हमने complete कर लिया था DPSP. Now moving forward towards the next part. The next part is Fundamental Duties. Article 51A, Part number 4A. This you have to keep in mind. Fundamental duties है हमारी Article 51A में और Part 4A में. Now, let's move forward. So, in originally जो हमारा Constitution जब form हुआ था, at that point of time, fundamental duties were not there. Fundamental duties part नहीं थी हमारी Constitution का. Fundamental duties got added by the 42nd Amendment Act of 1976. 42nd Amendment Act जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी. 42nd Amendment Act में fundamental duties भी ऐड हुई थी. Now, you guys will tell me what are the other two provisions that got added by the 42nd Amendment Act down in the comment section, as we have discussed this yesterday. So, जो हमारी fundamental duties थी वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे गॉट एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. कहां पे इंक्लूड किया गया? आर्टिकल 51A में, और पार्ट बनाया गया पार्ट 4A में. ठीक है. नाउ व्हाट आर दीज ड्यूटीज? What are fundamental duties? Very first question that comes to our mind while discussing the fundamental duties. हमने rights पढ़ ली, हमने preamble पढ़ लिया. What are duties? See, Constitution give us certain rights. ठीक है. हमारे पास कुछ rights है जो हमें Constitution के through provided है. Now the Constitution also says that citizen, you are not there only to enjoy rights. You also have to perform certain duties for your country. Okay. Now, it says you not only have the right, you cannot just enjoy the rights, you also have to perform certain duties for your country. So, what are the fundamental duties? They are defined as the moral obligation of all the citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. क्या है ये? मॉरल ऑब्लिगेशंस है. मॉरल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? मॉरल ऑब्लिगेशन सिटीजन्स के ऊपर है कि वो क्या हेल्प करे. एक तो पेट्रोटिज्म, देशभक्ति की स्पिरिट को प्रमोट करे, और क्या अपहोल्ड करे? यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की यूनिटी को अपहोल्ड करे. Next, it states these duties set out in Part 4A of the Constitution. कहाँ mentioned है? Part 4A of the Indian Constitution में. And concern individuals and the nation. और किन दो चीजों को concern करते हैं? एक तो individual, और individuals और nation के बीच में जो bond है, fundamental right play a very important role in enhancing. Fundamental duties play a very important role in enhancing that. Next. Like the directive principles, they are not enforceable by the court. अब directive principle क्या है? बिल्कुल they are not enforceable, but fundamental rights were enforceable. हमने पढ़ा था we cannot move to court for implementation of DPSP. They cannot be enforced by the court, but when it comes to rights, rights can be enforced by the court. But similarly, fundamental duties जो है हमारी, fundamental duties भी हमारी जो है non-enforceable है. They are also non-enforceable. Okay. Unless otherwise made enforceable by the parliamentary law. See, this particular statement. ये स्टेटमेंट ना बहुत बार ऐसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन देता है. जैसे आई टेल यू द वन ऑफ द क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट इज करेक्ट. ओके. सो यहाँ पे देखो, इसमें दिया है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट. दिस इज द करंट स्टेटस.
बट अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ फॉर्मुलेट कर देता है, कोई ऐसा लॉ बना देता है विच स्टेट दैट कि यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी, देन दे आर एनफोर्सिएबल. Currently, they are not enforceable by the court. Just like DPSP, Directive Principles of State Policy, उनके जैसा ही है. It is not enforceable by the court. But the next thing it states कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ फॉर्मुलेट कर देता है, they can be made enforceable. Okay. Next statement it is written, originally they were 10 in number and the fundamental duties were increased to 11 by the 86th Constitution Amendment Act of 2002. 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमें पता है क्या ऐड हुआ था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन. तो ओरिजिनली जब ये ऐड की गई थी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दे वर जस्ट 10 इन नंबर. बट आफ्टर दिस 86th CAA got increased to 11. So currently we have how many fundamental duties? We have 11. Now next thing, next one more thing over here, it is not written over here, you can write it down, another point. Fundamental right got incorporated after the recommendation of Swan Singh committee. Swan Singh committee की recommendation पे हमने fundamental rights include किए अपने constitution fundamental duties. So sorry, I'm saying fundamental rights, please pardon for that. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो इनकॉर्पोरेट हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अब गवर्नमेंट डिड व्हाट, पार्लियामेंट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल द रिकमेंडेशंस. ओके, पार्लियामेंट ने उसकी लाइंस पे फॉर्मुलेट की, पर सारी की सारी रिकमेंडेशन थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी की वो एक्सेप्ट नहीं की. नाउ कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं हमारे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. अभी मैंने बोला कि आपको ओरिजिनली 10 दी थी, पर 86 के बाद 11 हो. लेट्स डिस्कस दिस. सो सी, द फंडामेंटल ड्यूटीज नोटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. हर सिटीजन की ड्यूटी है. फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideals and institutions. कॉन्स्टिट्यूशन को वो अवॉइड करे और उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करे. द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करे. टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. चेरिश करे और फॉलो करे उन नोबल आइडियाज को जिसने हमारे नेशनल स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल को, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हुआ था, उस फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया. नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. इंडिया की सोवरेनिटी, इंडिया की यूनिटी और उसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना और अपहोल्ड करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है. नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. कंट्री को डिफेंड करना और जब भी नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया जाए तब आपको उसके लिए जाना पड़ेगा. दिस इज व्हाट नेक्स्ट इट स्टेट्स. टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. What it states, इंडिया में कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना अमंग ऑल द पीपल, नो मैटर वो किस रिलीजन के हैं, उनकी कौन सी वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है कि नहीं, वो कौन से सेक्शन के हैं, कौन से रीजन के हैं. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस क्या प्रमोट करना, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड हार्मनी. नेक्स्ट इट स्टेट्स टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. प्रैक्टिसेस जो वुमेन की डिग्निटी के लिए खराब है, जो डेरोगेटरी है, जो उसको डिमीन कर रही है, वो सबको रिनाउंस करना, उनको हटाना, ठीक है, या छोड़ देना. नेक्स्ट, टू प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर. हमारे कॉम्पोजिट कल्चर की जो वैल्यू है और उसकी जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको वैल्यू करना और उसको प्रिजर्व करके रखना. सेवेंथ वन स्टेट्स to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. Protect करना, improve करना natural environment को, which include the forests, lake, rivers and wildlife,
और कंपैशन करना लिविंग क्रीचर्स के लिए, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनके थ्रू उनके प्रति एक कंपैशन का फॉर्म होना चाहिए हमारे मन में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें है फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। क्या डेवलप करना? एक साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म का फॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस को रोकना, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। नेक्स्ट, to strive towards excellence in all the spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. Excellence हर sphere में individual excellence होनी चाहिए और collective activity होनी चाहिए, जिससे हमारा so that our nation can constantly rise to higher level of endeavor and achievement. Next it state, who is a parent of guardian? Either you are a parent or guardian, you have to provide opportunity for education to his or her child between the age of 6 to 14. So what it states, भाई हमारा right to education, कि if you your child is between 6 to 14 years of age, you have to give them what? You have to provide them opportunity for education. This is what the last one states. ये last one हमारा 86th CAA से add हुआ है, and these first 10, just give me a minute. Yeah, and these first 10, they were by the 42nd CA. Okay, so this you have to keep in mind. Now, what is the importance of these fundamental duties? इनको incorporate करने का main reason क्या था? ठीक है, उनको incorporate हमने क्यों किया fundamental duties को? So that they can remind Indian citizens of their duty towards the society and fellow citizens of the nation. ये duties क्या है? They act as a reminder कि आपकी कुछ ड्यूटीज हैं अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने फेलो सिटीजन्स के तरफ और अपने नेशन के तरफ. यू हैव सर्टेन ड्यूटीज. नेक्स्ट इट स्टेट्स, दे वार्न सिटीजन्स अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज. सिटीजन्स को वार्न करते हैं एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज में, दैट यू शुड नॉट पार्टिसिपेट इन सर्टेन थिंग्स. नाउ दे इंस्पायर सिटीजन्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम. सिटीजन्स को इंस्पायर करते हैं और उनके अंदर क्या एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं और कमिटमेंट को प्रमोट करते हैं. दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ. कोर्ट्स को क्या हेल्प करते हैं एग्जामिन करने में? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एम्बिट के अंदर है कि नहीं है. Any law which is formulated by the parliament, whether it is within the ambit of constitution or not. So what they help the court in examining and determining the constitutional validity of the law. This constitutional validity of the law, fundamental rights also help in determining, DPSP also helps in determining, and fundamental duties also help in determining the constitutional validity of law. Now, see, there are certain features of this fundamental duties. ठीक है, अभी हमने पढ़ तो लिया कितनी ड्यूटीज हैं, पर वो ड्यूटीज के कुछ फीचर्स भी हैं, उनके फीचर्स डिस्कस करते हैं. The very first thing is fundamental duties are characterized into two. दो तरह की ड्यूटीज हैं हमारी, वो जो 11 ड्यूटीज हैं उसमें 2 टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. पहला तो है मॉरल ड्यूटी, दूसरा है एक सिविक ड्यूटी. मॉरल ड्यूटी के अंदर क्या है? जो कि हमारी something which is related to our morals. For example, जो हमारे ideas है, this second fundamental duty, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle. Okay, तो ये morality से related है, that's why हमने इसको moral duties में classify किया हुआ है. ठीक है, तो मॉरल ड्यूटी है और नेक्स्ट वन है सिविक ड्यूटी. तो मॉरल ड्यूटी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल है चेरिशिंग नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी. नेक्स्ट कम सिविक ड्यूटी. सिविक ड्यूटी में क्या है? वी हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सिविक ड्यूटी. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर जस्ट कन्फाइंड टू सिटीजन्स. अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, then only you have to perform what?
fundamental duties. Otherwise, if you are a foreigner, then the fundamental duties do not extend to you. But अगर हम बात करते हैं यहीं पे fundamental rights की, अगर हम दोनों को compare करें fundamental duties और rights को, rights तो उनके पास available है. Foreigners have the fundamental rights. There are certain rights जो foreigners के पास भी हैं. For example, Article 14, 20, 21, 22 till 28. ठीक है, ये तो हमने फॉरेनर्स को प्रोवाइड किए, बट वी हैव नॉट गिवन देम एनी काइंड ऑफ ड्यूटी टू परफॉर्म. सो इट कैन बी अ क्रिटिसिज्म एज वेल. इसको हम क्रिटिसिज्म में भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे आर नॉन जस्टिसिएबल, जस्ट लाइक दे आर नॉन जस्टिसिएबल. नेक्स्ट, देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन. कोई लीगल सैंक्शन नहीं है अगर आप फंडामेंटल राइट को परफॉर्म नहीं भी करते हो. सो देयर कैन नो वन कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट यू. दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज कि उनके अगेंस्ट कोई लीगल सैंक्शन नहीं है उनकी वायलेशन के लिए. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द फीचर्स ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. ओके, नाउ let's do certain questions as this topic is very small. So we will be discussing some questions today. This is all you have in fundamental duties. Okay, this is all you have in fundamental duties. Itna hi hai, or because this topic is very, very small, I'll say the very small topic of our polity, the most small topic of our polity, smallest topic, sorry. Smallest topic is fundamental duties. All you have to keep in mind are the duties, all the 11 duties. You must be aware of them. कौन सी कमिटी ने सेटअप किया था, किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था, which amendment helped in which amendment, through which amendment we added fundamental duties to the Indian Constitution. Next thing, कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल में. It contains only one article, 51A, part 4. Okay, so this is how you can keep this in mind. So this is all we have for our fundamental duties. Okay, now let's move forward to the questions. First question states, which one of the following word was not included in the preamble of Indian Constitution in 1975? 1975 4 amendment कौन सा word था जो included नहीं किया गया था? So what is the very first option is fraternity, B is sovereign, C is equality and D is integrity. इनमें से कौन सा word था जो include नहीं किया गया था? Before amendment the word was integrity. So the answer is D. Next, this is the second question. Sorry, it's error from my end. In which form is India declared in the preamble of Indian Constitution? I mean, I have told you, you have to keep in mind the order. जब हमने preamble discuss किया था, मैंने आपको बोला था कि what you have to keep in mind, the order, किस order में उसमें आपको adjective is given. So second question देखो, I have also written कहाँ से ये question, particular question आया है. It is pre. book error है, it is pre. So now, किस फॉर्म में इंडिया डिक्लेयर है हमारे प्रीएम्बल में? The very first is sovereign, democratic, republic. A option is this. B option is socialist, democratic, republic. C option is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. And D option is none of the above. किस फॉर्म में दिया है प्रीएम्बल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? So when we have done preamble, at that point of time we have read the sequence. ठीक है, तो इंडिया is a what? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic. So option number C is correct. Option number C is correct. So answer will be C option. यहाँ पे answer is D option. First answer is D option, second answer is C option. So you can get questions like this. You can get questions like this. Apart from that, you can also get कि इनमें से कौन सा arrangement जो है वो correct है. Arrangement will be like democratic, secular,
republic, sovereign. A option can be this. B option can be secular, democratic, republic, sovereign. C option can be socialist, secular, sovereign, democratic, republic. And D option will be sovereign, socialist, secular, democratic, republic. Okay, so you have to keep in mind. Now, next. The term socialist was brought into the preamble of Indian Constitution by which amendment? ये जो term socialist है, ये preamble में Indian Constitution में किस amendment के through लाया गया था? So this is what this question states. Now you will tell me the answer because we have discussed this in preamble lecture. Okay, so you will tell me what is the answer of this particular question in the comment section. And if you cannot recall the answer, please go visit preamble. Preamble वाला lecture जाओ, वहां से खोलो और फिर वहां से जाके पढ़ो. Next, fourth state. The word socialist and secular were inserted in the preamble to the constitution by. See, question number 3 and 4 are almost same. बस उसमें ऊपर socialist दिया है and the another one is socialist and secular. So this is how you can expect questions. Why I have included it? See, I have included it so that I can tell you कि बहुत बार क्या हो सकता है, आपको बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर चीज किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड की गई है. जैसे यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर है. दे कैन ऑल्सो आस्क कि आपका जो 42nd अमेंडमेंट है उसके थ्रू क्या इंक्लूड किया गया था. Okay, they can also ask this. So now the question number 4, the answer of these two you will tell me again because I am not telling you the answer even though I have, but still. So now you will tell me the answer in the comment section. Socialist and secular. And what does socialist and secular mean? Socialist or secular का meaning क्या है? This you will tell me down in the comment section. Question number 5. Which of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? इनमें से कौन सा liberty जो है वो preamble में हमें mention नहीं किया गया है. When we go to preamble, we saw that liberty of speech, expression, and thought, all this is written over there in explanation. So now, इनमें से कौन सा liberty हमें Constitution of India के preamble में mention नहीं किया गया? First is liberty of thought. Say B option is liberty of expression, C is liberty of belief, and D is economic liberty. So we have liberty of thought, expression, and belief, but we do not have economic liberty. We have social and economic justice, but we do not have economic liberty. So option number D, economic liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India. Now, sixth question. Sixth question states, where have the words "We the people of India" have been used in the Constitution? कहाँ पे "We the people of India" use हुआ है Constitution में? "We the people of India" हमने सबसे straight away एक जगह पे पढ़ा था, that is preamble. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic, democratic republic. So कहाँ पे पढ़ा है हमने ये? Preamble of the Constitution. So we the people of India was mentioned in preamble of Constitution. Seventh, Supreme Court of India has propounded the doctrine of basic structure of the Constitution in which of the following cases? किस केस के अंदर Supreme Court ने doctrine of basic structure को propound किया था? So the answer will be what options is A is Golaknath, B is Sajjan Singh, C is Keshwananda Bharti, D is Shankari Prasad versus Indian Union. So the answer is what? Keshwananda Bharti versus State of Kerala. This is what in this Keshwananda Bharti case हमें पता है, it is a landmark judgment. Landmark judgment था हमारा केशवानंद भारती. केशवानंद भारती में doctrine of basic structure. Now I have one question for you, and the question is, Supreme Court of India has propounded doctrine of, यही same question है, बस doctrine of basic structure की जगह doctrine of harmonious construction of the Constitution in which of the following?
किस केस के अंदर दीज आर द सेम ऑप्शंस, यही चार ऑप्शंस है. जिस बेसिक स्ट्रक्चर की जगह डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, Supreme Court of India has propounded the doctrine of harmonious construction of Supreme Court in which of the following cases? Let me know the answer in the comment section. Let me know the answer. Now, eighth question states, the provisions related to the fundamental duties in the Constitution were added on the recommendations of. जो प्रोविजंस हैं जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐड किए गए तो किसकी रिकमेंडेशन पे किए गए थे, किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज गॉट एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट इज बलवंत राय मेहता कमिटी, बी इज अयंगर कमिटी, सी इज स्वर्ण सिंह एंड डी इज ठक्कर कमिटी. तो ये हमारे पास चार कमिटीज हैं और किसकी रिकमेंडेशन पे किए गए थे? इट इज स्वर्ण सिंह कमिटी. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब की गई. नेक्स्ट 9th, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब इनकॉर्पोरेट की गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था. कब आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 1976. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ 10th, what it states, the fundamental duty to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is mentioned at number C. हमने जब यहाँ पे अभी फंडामेंटल ड्यूटीज की थी, अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस की थी. ओवर हियर वी हैव डिस्कस द नंबरिंग कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे हमारा ये वाला पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटीज है, थर्ड पे ये है. सो व्हाट दिस क्वेश्चन मींस, द क्वेश्चन स्टेट्स कि आपकी कौन सी फंडामेंटल, कौन से नंबर पे ये पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. कौन से नंबर पे फंडामेंटल ड्यूटी है? लेट्स सी, इट इज एट नंबर 3, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. So the answer is number 3. This is also you can this is also you have to keep in mind कि कौन से नंबर पे कौन सी है. That's why I say you should know all the 11 duties with respect to their order. Order के साथ आपको एक पूरी की पूरी 11 duties याद होनी चाहिए. Now 11th, under which article of Indian Constitution the provision for fundamental duties has been made by the 42nd Constitution Amendment Act? किस आर्टिकल के अंडर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd सीए के थ्रू ऐड की गई? दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन स्टेट्स. सो कौन सा आर्टिकल है हमारा? आर्टिकल 50, 52, 53 एंड 51 है. वी नो दैट डीपीएसपी एंड्स एट 51 और 51 ए क्या है हमारा? इसके स्ट्रेट अवे बाद हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट 4 में है हमारी डीपीएसपी. पार्ट 4 में है वी हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड 51 ए यहाँ पे क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज. दिस इज पार्ट 4A. ओके, 51 का एक और आर्टिकल 51A और उसी के अंदर एक पार्ट 4. दिस इज हाउ यू कैन कीप दिस इन माइंड. सो आर्टिकल कौन सा है हमारा? 51A. नाउ देयर आर 10 commandments which were added by the 42nd Amendment Act in the Constitution of India are called. ये जो 10 अमेंडमेंट्स कमांडमेंट्स है जो हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज फंडामेंटल राइट्स, बी इज ड्यूटीज, सी इज पंचायती राज प्रिंसिपल्स एंड डी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये चार ऑप्शंस है. तो 10 कमांडमेंट्स मतलब 10 ड्यूटीज क्या ऐड हुई थी हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू? दे वर फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, अब 11th वन हमारी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी 2002, जिसमें ऐड हुआ था राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 years of age. Now 13 states the fundamental duties of citizen do not include duty. इसमें से कौन सा ड्यूटी है जो हमारे पास, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड नहीं हुआ है? वेरी फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. दिस इज द फर्स्ट.
to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle, to strive towards abolition of untouchability, and to develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. Let's move back to our fundamental duties. अब यहाँ पे हमारा 8th वाला fundamental duty है to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. Second वाला fundamental duty है to cherish and follow the noble ideas inspired our national struggle. And हमारे पास 7th वाला fundamental duty है to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife. Now let's move back to our question. Yeah. So this one is to protect and improve the natural environment. 7, to cherish the noble ideas. Number 2, strive toward abolition of untouchability. We can't see it over there. And this is number 8. तो हमारे पास ये तीनों हैं, बट इसने पूछा है कौन सी ड्यूटी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है. सो दिस इज सी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. दिस इज व्हाट आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट के अंदर है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारी आर्टिकल 17 में है, एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? नाउ ऑप्शन ए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट स्टेट, fundamental duties, they are part of fundamental rights, which is in part 3 and this is in part 4a. So this is incorrect. Very first thing, पहला statement हमारा incorrect निकला. Let's see others as well. Fundamental duties are not part of fundamental rights. True. Fundamental duties are enumerated in part 4a of the Indian Constitution. Again true. Article 51A explain the duties of every citizen of India. 51A में हर citizen of India की duties explain की गई है. This one is also true. So option number A is our incorrect one. So this is the correct answer. You have to keep in mind correct, incorrect, because what I used to do now when I started practicing questions, मेरे incorrect वाले ज्यादा गलत होते थे correct वालों से, because मैं I get confused इसमें incorrect लिखा है कि correct लिखा है, and as you know that वहाँ पे examination में there is a lot of pressure on you, so you have to keep this in mind. So whenever you read a question, उसमें अगर correct लिखा है तो उसको अपनी pencil या pen से, they also carry different color of pens because they also help. Carry में red color pen, उसको highlight कर लो वहीं पे that this is correct. अगर वहाँ पे correct लिखा है तो correct को नीचे ऐसे underline कर लो. This is what you can do. Now article 50, question 15. Which one of the following is not a part of fundamental duties under Indian Constitution? Indian Constitution के अंदर इनमें से कौन सा particular statement fundamental duties का part नहीं है? ये same question हमने पीछे भी किया. Let's see. The first is to defend the country and render national service. Okay. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. To help in organizing village panchayats and to safeguard public property and to abjure violence. So we know that this one is also our fundamental duty. This one is also fundamental duty. And this one is also fundamental duty. To organize village panchayats, it is not fundamental duty. ये कहाँ पे mentioned है? ये हमारे directive principle of state policy में mentioned है under Gandhian principles. Under Gandhian principles हमारे पास ये mentioned है. So this is what we have. Next. Question number 60. Which of the following is not correctly matched? I have told you you can get questions from match as well. Now you have to tell me इनमें से कौन सा correctly matched नहीं. So the question part A is part 2 citizenship, part 3 fundamental rights, part 4 DPSP, part 5 fundamental duties. So 4 options हैं. This is column A, column B. So part 2 is citizenship. Yeah, we know that part 2 is citizenship. Okay. Part 3 is fundamental rights. Part 1 is what? Part 1 is, it talks about India, Union and states, जितने भी हमारे mentioned है, ठीक है, उसके अंदर दिए हुए हैं. Part 2 talks about what? Territory of India, you can say. Now, part 2 talks of citizenship. Part 3
talks of fundamental rights. Part 4 talks of directive principles of state policy. Part 5, Part 4A, sorry, इसके अंदर हमारा Part 4A है, which talks about fundamental duties. Part 5 talks about union. So this is how we have. Part 5 talks about what? Union. It doesn't talk about fundamental right. Fundamental duties, sorry. Fundamental duties हमारी कौन सी part में है? It is enumerated in Part 4A. So D option is not correctly matched. क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा is not correctly matched? So this is D option. D option is not correctly matched. Now next. Which of the following is /are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा statement जो है among the fundamental duties are laid down in the Indian Constitution, जो हमारे Indian Constitution में mentioned है, इनमें से कौन-कौन सी fundamental duties? Let's see. A is to preserve the rich heritage of our composite culture. This is correct. It is given over here. It is given in the fundamental duties. To protect the weaker section from social injustice. Okay. Third is to develop the scientific temper and spirit of inquiry. D is to strive towards excellence in all the spheres of individual and collective activity. Now, we know that to protect the weaker sections from social injustice, it is not given in where? It is not given in our fundamental duties. But 1, 3, and 4 is given in our fundamental duties. These are our fundamental duties. So let's see इनमें से कौन सा option है जहाँ पे 1, 3, 4 है. It is option number C. C option is our correct answer. So this is all we have for our fundamental duties. I have told you किस में से किस तरह के questions आपसे put up किए जा सकते हैं exam में. You have to keep this in mind. From tomorrow onwards, we will be starting our part 5 of Indian Constitution, that is union. कल हम union start करेंगे जिसमें we will have legislative, executive, and judicial. Okay, we will discuss all these. Then we will move to the other part. So this is one of the most important part. It will cover one of the most important lectures. Most important lectures cover करने वाला है ये part हमारा, because we will discuss the powers of president, we will discuss the powers of prime minister, council of minister, judiciary में supreme court discuss करेंगे, legislature में लोकसभा राज्यसभा discuss करेंगे. We will discuss all this in our part 5. So we will be starting part 5 from tomorrow, and it will hardly take 20-30 days, I think, max to max. So that's all for our today's class. If you guys have any doubt with respect to fundamental duties, fundamental rights, TPSP, or any of the earlier lecture that we did till now, then you can let me know down in the comment section. That's all for today's class. Please keep revising and keep studying. All the best for you.